Hello बच्चों, let us read this question. Let z1 equals 1 plus iota and z2 equals minus 1 minus iota. Find z3 belongs to C, मतलब complex number, such that the triangle z1, z2, z3 is equilateral. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट चाहिए that will be the concept of rotation. Key concept will be concept of rotation. अब ये concept of rotation क्या है? This is a part of complex numbers chapter which tells you that if you have three complex numbers, मान लो z1, z2 and z3, these are three complex numbers जिनको आपने line segment से join किया है, and if the angle between them is theta, then the concept of rotation tells us that z3 minus z2 divided by z1 minus z2, this will be equal to modulus of z3 minus z2 divided by modulus of z1 minus z2 multiplied by e to the power iota theta. यहाँ पे याद रखना बहुत ज़रूरी है कि mod z3 minus z2 is basically the distance between z3 and z2. तो mod z3 minus z2 मतलब ये distance हो गया, और ऑब्वियसली mod z1 minus z2 मतलब z1 और z2 के बीच का डिस्टेंस हो गया. So now let us try to solve this particular problem using the concept of rotation. तो z1, z2, z3 तीनों जो है एक equilateral triangle की vertices है. So let us draw this equilateral triangle. So in this equilateral triangle, let us assume that this point is z1, which is equal to 1 plus iota, and this point is z2, which is equal to minus 1 minus iota, and of course this point is z3, which we are required to find out. z3 हमें निकालना है, तो of course we will be using the concept of rotation. Definitely you know that in an equilateral triangle this angle will be 60 डिग्री, मतलब हर तीन एंगल जो होता है इंटरनल एंगल वो 60 डिग्रीज होती है, मतलब पाई बाई 3 रेडियंस. तो कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन को अगर हम अप्लाई करते हैं इस प्रॉब्लम में, वी कैन क्लियरली सी दैट z3 minus z2 divided by z1 minus z2, this will be equal to modulus of z3 minus z2 divided by modulus of z1 minus z2 multiplied by e to the power iota times pi by 3. And of course you might be knowing that Euler's form of complex number tells us that e to the power iota theta, this is equal to cos theta plus iota times sin theta. तो इसी चीज को यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देंगे, and hence we'll find out from here, if we substitute the values, we obtain that z3 minus z2 can be simply written as z3 minus, in place of z2 we'll write minus 1 minus iota, divided by z1 minus z2 will be 1 plus iota minus minus 1 minus iota, and this is equal to, अब देखिए mod z3 minus z2 मतलब तो z3 से z2 के बीच का डिस्टेंस, एंड mod z1 minus z2 is basically z1 से z2 का डिस्टेंस. लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल में all the three sides are obviously same. That means these two quantities will get cancelled out because they are actually equal. And now e to the power iota times pi by 3 can be expanded using this formula. So we write cosine of pi by 3 plus iota times sine of pi by 3. इसमें थोड़ा सा हम लोग डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे z3 माइनस, यहाँ से अगर माइनस आप बाहर कॉमन लेते हो तो दिस विल बिकम z3 प्लस 1 प्लस आयोटा, विच इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो देख लेते हैं एक बार, दिस इज गोइंग टू बी 1 प्लस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा, राइट, क्योंकि ये माइनस है, यहाँ पे सब कुछ प्लस हो जाएगा. कॉस
पाई बाई 3 cos 60 डिग्री वो हो गया हाफ, प्लस आयोटा टाइम्स साइन 60 डिग्री इज √3/2। एंड इसको थोड़ा सा हम लोग अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस इज 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई हाफ प्लस iota times √3/2. Of course, we can multiply. So 2 multiplied by half will be 1 plus 2 multiplied by I √3/2. 2 cancels out. It becomes I times √3 plus I times half becomes I by 2, or I times √3/2 becomes I squared √3/2. And we know I squared is -1. So this becomes minus √3/2. Of course, you will understand that यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं Z3 दिस इज इक्वल टू, सिंस वी रिक्वायर Z3 इस 1 प्लस आयोटा को हम लोग राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। यहाँ पे देखिए 1 माइनस √3/2 इज द रियल पार्ट, सो 1 माइनस √3/2 कैन बी कंबाइंड, और यहाँ पे आयोटा कैन बी टेकन कॉमन टू गेट √3 प्लस हाफ, और यहाँ से हमने डोंट फॉरगेट 1 प्लस आयोटा को राइट में लेके गया, तो -1 minus iota is what we shall be having. From this we can proceed and write it down or simplify it as, यहाँ से देखो 1 minus √3/2 is the real part, इस 1 को भी यहाँ पे इंक्लूड कर दो, मतलब -1 यहाँ पे इंक्लूड करके दिस इज द रियल पार्ट। सिमिलरली इन दोनों में से अगर i को कॉमन लेते हो तो यू विल गेट √3 प्लस हाफ -1, इवेंचुअली दिस बिकम्स 1 and -1 get cancelled, minus √3/2 plus iota times half minus 1 is of course minus half, so this is √3 minus 1/2. You can keep the answer like this, and hence we can say that the final answer to this question is the complex number Z3 is equal to, in the standard form, minus √3/2 plus iota times √3 minus half. This is the answer to this question. I hope you understood the solution well. Best of luck.